Okay, in the last class we have discussed about the normal body temperature, isn't it? Today we will be discussing about abnormal. Abnormal means not normal. Okay, so hypothermia. So hypothermia means what? Hypothermia means when you produce when the body loses fats. Okay, loses heat faster than it can produce heat. Okay, so the normal temperature is 98.6 degree Fahrenheit, but in hypothermia, what will you get? The temperature, the body temperature falls down. Okay, because they lose heat. Okay, so in hypothermia, you will see that as the body loses heat, so the temperature will automatically get down from 98.6 degree Fahrenheit to 95 point degree Fahrenheit, or else you can say if you convert into Celsius, it is known as 35 degree Celsius. Okay, did you understand? Did you understand about hypothermia? Okay, hypothermia means Yes, Yes, ma'am. losing of heat. So if your body loses heat, the normal temperature was 98.6 degree Fahrenheit, isn't it? So your body temperature will now become 95 degree Fahrenheit. Okay, so hypothermia Yeah. means Okay. losing of heat in our body. Okay, so ये hypothermia का मतलब क्या है? Hypothermia का मतलब टेम्परेचर लूज करना। ठीक है, जो टेम्परेचर तुम्हारे शरीर के अंदर है, बॉडी के अंदर है, क्या होगा यहाँ पे तुम लोग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर कितना था? Yes. नॉर्मल टेम्परेचर कितना था? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है कि नहीं? तो ये हाइपोथर्मिया में क्या Fahrenheit. होगा? 95 हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 95. हाँ, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना हाइपोथर्मिया का मतलब? Did you understand na the meaning Yes. of okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, what is this topic name? It's under vital signs only, temperature. In the last class, we have discussed about all the normal things. Today we will be discussing about the abnormal things. Abnormal in a sense like what to say? The body loses heat, na? So we will discuss about this one today. Why it comes under vital signs only. Okay? ये vital signs के अंदर ही आता है. समझ में आया? Okay, ma'am. हाँ हाँ. तो क्या होगा अगर बॉडी टेम्परेचर लो होने से? इफ आवर बॉडी टेम्परेचर विल गेट लो, व्हाट विल हैपन? फ्रॉम बीइंग आउट इन कोल्ड वेदर क्या हो जाएगा? हम लोग का डिसऑर्डर हो जाएगा, जैसे कि शॉक भी हो सकता है। शॉक की वजह से भी हो सकता है ये लो बॉडी टेम्परेचर ना, शॉक के वजह से भी हो सकता है, और डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है, और थायराइड कम होने से भी हो सकता है। ठीक है, ये जो थायराइड ये सब है ना, मैं एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस करूंगी। ठीक है, so why do we get low body temperature? Why? Because a person a person may consume alcohol or drugs, so for that a person can get shock also. Okay, and also mainly a person can get this hypothermia because of diabetes also, or else maybe because of thyroid also, low in thyroid. Okay, so all this thyroid gland and all, I'll explain to you in endocrine system. Okay, so for now you just know that because of low thyroid, the body temperature will decrease. Okay, so if we get a low body temperature, you might get an infection also. Means it will be easy for your body to get infected. ओके, तो ये लो बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होने से क्या हो सकता है? इन्फेक्शन होने का चांसेस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लो बॉडी टेम्परेचर ज्यादातर किस किस को होता है? ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज, मतलब जो नया बच्चा, मतलब जो पैदा हुआ है। ओके, और ओल्डर एडल्ट मतलब जो बुरे लोग हैं, थोड़ा बुरे लोग, और पीपल हु आर फ्रेल का मतलब जो थोड़ा कमजोर है, कमजोर लोग। ठीक है, तो दिस लो बॉडी टेम्परेचर to whom like it's mostly have the chance to get infected, mostly this low body temperature
they have chance, means in a person who are newborn babies, okay, newborn babies and older adults, and people who are frail. Who are frail means a person who is weak immunity, okay, who is having low in immunity, who are having low, means newborn babies, older adults, all these people are prone to have low body temperature. Okay, did you understand? Yes, ma'am. uh, Yes, Yes, ma'am. ma'am. because of all this, like a person is prone to have low body temperature, maybe because of consumption of alcohol or drugs and so forth. A person might have shock, okay, or else a person might have disorders like what, a person may have diabetes or low thyroid, okay, and so for that it will be very easy for a person to get all these kind of, means what to say, infection, okay, and it mostly happens and it mostly occurs to older adults, who are elderly people, who are newborn babies, and people who are having low immunity, means frail people, frail, frail means weak people, kamzor log, okay. Okay, okay, shall we move to the next slide? Yes, ma'am. Okay, so if you get this hypothermia, okay, अगर hypothermia होने से क्या क्या साइंस मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा इंसान में, ठीक है, तो इफ यू गेट दिस hypothermia, so what are the signs and symptoms which you will find in a person? Okay, first is shivering. Obviously the person will shiver, isn't it? A person is feeling cold, means if the body is losing heat, obviously the person will shiver. Okay, so अगर एक इंसान को ठंड लगने से क्या होगा, obviously वो कांपेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका बॉडी में मतलब हीट जा रहा है, ठीक है, हीट और प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, वो इंसान कांपेगा, ठीक है, शिवर हो जाएगा, a person will shiver. Okay, the first one. The second one, exhaustion. Exhaustion मतलब थकान, tired. A person will feel tired very soon. Okay, and next is confusion. If a person is having hypothermia, he or she will be confused what to do, what not to do. Okay, अगर अगर इंसान का हाइपोथर्मिया होने से क्या हो जाए, वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सब में मतलब कंफ्यूज हो जाएगा. और फम्बलिंग हैंड्स मतलब what to say, clumsy. A person will become clumsy, मतलब स्टिल नहीं होगा उसका हाथ में, उसका हाथ ना स्टिल नहीं होगा, मतलब मतलब कुछ ना कुछ गिरते रहेगा उसका हाथ में, ठीक है. फंबल हैंड्स मीन्स this one, clumsy. You know the meaning of clumsy? Huh? Do you know the meaning of clumsy? No, ma'am. No, ma'am. Clumsy means what to say, a person won't be able to stand still, मतलब how to explain, means if a person will catch some okay, let's say pen, okay, or a book, if a person is catching that, he won't be able to catch that thing properly, even, means because of that shivering, because of the hands shivering, right? So it might fall from his hand also. Okay, did you understand Yes. now? Yes, ma'am. So it means that one, fumbling hands means clumsy. The person will become clumsy, means he won't be able to stay still. Okay, it's not actually numb. It's not numb. Okay, some are saying numb. It's not numb. It's fumbling. Fumbling means clumsy. Clumsy means a person won't stand still. Means means his activities won't be normal. It will be a bit what to say. Khilimili. You know khilimili. You know, na? I think this one too you will know khilimili. Yes. हाँ, khilimili. It will be, means it won't be in proper नहीं होगा, जो जो काम कर रहा है ना ये इंसान, प्रॉपर नहीं, सब खेली मेली होगा, मतलब एक हाथ से कुछ गिरेगा, दूसरा हाथ से कुछ गिरेगा, ऐसा है, ऐसा होगा, ठीक है.
तो फम्बलिंग हैंड्स मीन्स उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है, फम्बलिंग हैंड्स। ओके, नेक्स्ट इज मेमोरी लॉस। A person will lose his memory. Okay, memory loss मतलब उसका मेमोरी लॉस हो जाएगा, ठीक है, मतलब भूल भूल जाएगा वो, मतलब क्या क्या था, आज सुबह क्या क्या था, अभी अभी क्या क्या था, मतलब भूल जाएगा, ठीक है। स्लर्ड स्पीच मतलब प्रॉपर नहीं होगा, जो वो बोलेगा ना प्रॉपर नहीं होगा, अच्छी तरह से वो नहीं बोल पाएगा, ठीक है। स्लर्ड स्पीच मीन्स a person won't speak properly, means you won't be able to understand that much clearly what a person is saying. Slurred speech. Okay. And drowsiness means a person will have headache, a person will what to say, will be weak. Okay, drowsiness. कमजोर हो जाएगा, माथा घूरेगा, ऐसा है, माथा घूर जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। समझ में आया ना साइन एंड सिम्टम्स? Did you understand sign and symptoms of hypothermia in adults? Okay, now let's see in infants what it will be, what it will occur. In infants you will see bright red cold skin. Okay, means the color of the skin of the baby, it will be bright red in color and it will be cold. Okay, the skin will be cold, cold, cold. Okay, जो बच्चे लोग का उन लोग का स्किन कैसा होगा, थोड़ा ब्राइट रेड होगा, ओके, ब्राइट रेड होगा और उन लोग का स्किन ना वो हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? Did you understand in infants signs and symptoms? First point. Okay, the next point is very low energy. Okay, so even this one also, it will become very low. The energy level of the baby also will be very low. Maybe the baby won't play, you won't feel like playing. Okay, the daily activities, if maybe like if you will laugh at him, if you play with him, I mean the baby, he or she might not like to mingle with you. Okay, मतलब बेबी ना, मतलब उन लोग का एनर्जी कम हो जाएगा। जैसे कि अगर तुम बेबी के साथ खेलना चाहती हो तो क्या होगा, वो नहीं खेल पाएंगे, मतलब कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा, ओके, क्योंकि उसका एनर्जी बहुत लो है ना, energy is very low, so for that the baby will be very weak. Okay, did you understand signs and symptoms of hypothermia? Yes, ma'am. Okay, shall we move to the next slide? Yes. Okay, so I will just discuss again. Okay, थोड़ा और discuss करते हैं। तो मैंने क्या बोला था पहले, Miss what? Let us all discuss again. This is just the overview. Okay, this is just the overview of the symptoms which you'll get in the hypothermia. So let's just see again. So first sign you will see is the shivering, means कांपेगा इंसान. Okay. तो if you will get this hypothermia, so what are the signs and symptoms you will get? First is shivering, slurred speech और mumbling, मतलब अच्छी तरह से speech नहीं दे पाएगा, ओके। नेक्स्ट हो गया weak pulse, pulse भी weak हो जाएगा, the person will have weak pulse, ओके। clumsiness और lack of coordination, ठीक है, मैंने बोला I have already said clumsiness, the person will become clumsy, means a person won't be able to do the activities properly. It will be up and down, means whatever he or she is doing, everything will be messed up. Okay, means उल्टा पुल्टा हो जाएगा उसका जो काम होगा ना। और नेक्स्ट है ड्राउजीनेस और लो एनर्जी, उसका एनर्जी बहुत कम हो जाएगा। ड्राउजीनेस मीन्स लो एनर्जी, ओके, उसका माथा ये सब घूर के उसका एनर्जी भी लो हो जाएगा। ड्राउजीनेस मीन्स low in energy and the person might feel like means maybe a person might feel that his or her head is going around, moving around. Okay, so next is confusion or memory loss. Okay, and the person might lose his consciousness also, बेहोश भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट आता है infant, मतलब babies.
And the last is for the babies. That is, the skin of the baby will be bright red, and a baby will have cold skin. Okay, so these are this. Okay. So are you clear with all these symptoms? Are you clear, everyone? Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Okay, let me just ask you one thing. If a person is feeling cold, if a person is losing heat from his body, Yes. अगर एक इंसान ठंड लगने से, अगर उसका शरीर में मतलब हीट जो जो हीट मतलब जा रहा है, तो कैसे प्रिवेंट करेगा वो अपने आप को हाइपोथर्मिया नहीं होने के लिए? So if a person is feeling cold, and if the person is losing heat from his body, so what will be the first steps to be taken to protect himself or herself from hypothermia? Can anyone say? बहुत सारे कपड़े पहना देंगे। बहुत सारे कपड़े, जैसे कि कपड़े स्वेटर। तो स्वेटर, स्वेटर है कि नहीं? बहुत सारे जो मतलब पेशेंट या पर्सन के लिए क्या बोलेगा, कंफर्टेबल हो, है कि नहीं? मतलब उसको उसका बॉडी वेट नॉट वेट, हीट गेन करने के लिए हम लोग ये सब सारा मतलब गरम कपड़े है ना, उन लोग को पहना देंगे। तो इफ अ पर्सन इज फीलिंग कोल्ड, ऑब्वियसली यू विल हैव टू वार्म हिम हाउ? by asking the person to wear warm clothes. Okay, we are done with clothing, and next, anyone else? हम लोग कपड़ा हो गया, और दूसरा चीज, anything else? Yeah, Samuel, you are खाना, diet। diet पे भी डिपेंड होगा. It will depend upon the diet like what? Cold drinks. হানি খালেও গরম হবো গা। হানি খালেও গরম হবো ম্যাম honey. বডিটো। Okay. And first thing, cold drinks. Warm water. Warm water, yes, warm water. You have to warm water, and you have to make the person drink it. Okay, I'll show you. First, warm dress. Okay, warm dress like what? Sweater, socks, gloves, okay, caps, all this. You have to warm the patient, or we have to warm the person by making him wear all these things. Okay, okay, तो इंसान को मतलब एक इंसान को अगर हाइपोथर्मिया होने से क्या होगा, हम लोग उसको ये सब कपड़े ये सब पहना देंगे, जैसे कि स्वेटर, मफलर और मोजा, सॉक्स, ये सब. ओके. एंड सेकेंड इज प्लेंटी ऑफ रेस्ट. प्लेंटी ऑफ रेस्ट मीन्स उसको आराम देंगे, ठीक है, उसको कुछ नहीं करने देंगे, उसको रेस्ट ही करने देंगे, ठीक है. So the second point is you will make the person rest, means you won't allow the person to do work, okay, to do some activities. Okay. And the next is diet. Adequate diet. Adequate diet like you have already said, adequate diet जैसे कि warm चीजें, जैसे कि गरम खाना, ठीक है, गरम पानी, ठीक है, गरम सब्जियां, ये सब, ठीक है. समझ में है ना? एडिक्वेट डाइट जैसे फॉर एग्जांपल warm rice, warm curry, warm water, all this. So all this will come under adequate diet. Okay. Yes. Okay, and the next is limited exposure. Okay, so the last is limited exposure. Limited exposure means what? Means you won't expose the person. For example, if a person wants to go out, you won't allow him or her to go out. Or if you won't open maybe ventilation, you won't open maybe
windows, you won't open maybe doors, all this. So that means limited exposure. And you will warm Yes. all the person's body with warm clothes. You won't expose the person. ठीक है, तो लिमिटेड एक्सपोजर का मतलब क्या है, उसको लिमिट में एक्सपोज करेगा. ठीक है, जैसे कि खिड़की या वेंटिलेशन या दरवाजा ये सब बंद करके उसको रूम के अंदर ही रखना पड़ेगा. ठीक है, Okay. समझ में? Did you understand ना? Yes, ma'am. Okay, any doubts? No, ma'am. No. ma'am. Okay, that was all about hypothermia. And next is hyperthermia. Hyperthermia I will explain to you in the next class. But I will just... Ma'am, one question. Ma'am, এটো হয় কিয় actually? Hypothermia টো কিয় হয়? Because a person will have low thyroid. I've already said low thyroid, or maybe because of diabetes, or maybe because the person is consuming alcohol or drugs. Okay, or maybe the person is too much exposed to cold temperature, cold weather. Okay. So for all this hypothermia is occurring. क्यों होता है ये hypothermia? क्योंकि पर्सन का मतलब इंसान का अगर उसका थायराइड कम होने से या उसका डायबिटीज होने से अगर पर्सन का वो ज्यादातर अल्कोहल पीता है या ड्रग्स लेता है, क्या हो जाएगा, उसको चांसेस हो जाएगा ये हाइपोथर्मिया होने के लिए. और ज्यादातर से ज्यादातर किसको होता है, जिसका मतलब न्यूबॉर्न बेबी. Okay, newborn baby. No. Okay, one also you can say no. Means who is much exposed to cold weather. Okay. For example, snowfall हो रहा है, तो अगर एक इंसान स्नोफॉल में मतलब 1-2 घंटा रहने से क्या हो जाएगा, उसको ऑब्वियसली हाइपोथर्मिया लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि बहुत समय से वो एक्सपोज हो रहा है ठंडे वेदर पे, ठंडे क्लाइमेट पे. ठीक है, तो उसकी वजह से उसको मतलब हाइपोथर्मिया हो गया. समझ में आया? ओके. Yes, ma'am. Thank you. हाँ. तो ये ज्यादातर से ज्यादातर किसको होता है? ज्यादातर से ज्यादातर मतलब जो लोग कमजोर है, ठीक है, फ्रेल, FRAIL, फ्रेल, इम्यूनिटी कम है. हाँ, जिसका इम्यूनिटी कम होता है उन लोग को ज्यादातर होता है. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में है ना? हाँ. मैम ये यूनिट कितना का है? ये यूनिट नहीं है, क्योंकि वाइटल साइंस तो it comes under one topic only. It has no unit. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, हाँ सूरजीत, क्या? प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकल कॉपी में ठीक है, मैं दे दूंगी. ओके. ये सब ना वाइवा में पूछेगा, ये सब जो क्वेश्चंस मैंने बोला था ना, ज्यादातर से ज्यादातर वाइवा में पूछते हैं ये सब. ठीक है. हाइपोथर्मिया अगर होने से कितना टेम्परेचर होता है, हाइपोथर्मिया होने का चांसेस किसको ज्यादातर होता है. Okay, so all these type of questions now today which I have discussed, all these type of questions mostly they used to ask in Viva. Okay, maybe they will ask you in hypothermia, what is the temperature which you get, and what is the normal temperature, and who is more prone to have hypothermia? Why do we have hypothermia? Okay, what are the signs and symptoms which you will get during hypothermia? These type of questions they will ask you in Viva. Okay. Are you all clear? Yes, ma'am. About hypothermia. Okay, hypothermia. What was the temperature of hypothermia? Anyone? 97 degrees Fahrenheit.
95 degree Fahrenheit. 95. 95. 95. Okay. 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 Binisha. Sorry. Bishinya. Bishinya. Can you hear me, Bishinya? Bishinya, can you hear me? Okay, then Arsbun Karjana. Can you hear me, Arsbun? Arsbun, am I audible? Arsbun, am I audible to you? Huh? No reply. Okay, Hemam Shelly Devi, can you hear me, Hemam? Hemam, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, can you tell me any two signs and symptoms of hypothermia? Shivering, Huh. Then? confusion, Okay, okay. Okay, Ishan, Yes, ma'am. can you tell me any two other symptoms, signs and symptoms of hypothermia? She said shivering and confusion. Anything else? Huh? Anything else? Signs and symptoms. Your friend said shivering and confusion. Anything else from your side? Low breathing. Low breathing. Weak pulse. Okay. And Loss of consciousness. loss of consciousness. Okay. Okay, Combe Ellis. Can you hear me, Combe Ellis? Combe Ellis, can you hear me? No. Okay, Medini Pegu, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, can you tell me preventive measures of hypothermia? How can we prevent? Wearing warm clothes Then? and drinking warm water. Okay, diet, na? Okay. Okay then. Thank you. That's all for today's class.